Jai Hind students. So today we will start with the most important topic, substitution method. So this method is useful in trigonometry also, inverse trigonometry also, derivative also, and in integration also. So learn this properly, and some concepts are written on the blackboard. You have to learn these concepts. So you will not fail in this method while you will use this method in the examination or anywhere. These are the shortcut things which is helpful in the paper or while attempting the question. First of all, differentiation using trigonometric substitution. Form of x in inverse. अगर कुछ इस टाइप की फॉर्म बनी होती है तो वी हैव टू पुट वेदर साइन थीटा कॉस थीटा. So formula क्या बनेगा? Sin 2 theta. So same like that. 2x 1 upon 1 plus x square. So these are some general instructions. If this kind of form is there, you have to put this one. So this is one kind of, you can say that, substitution of trigonometry. Now some algebraic kind of trigonometry is also, that form of exponents are also there on this side. That is type 2. If there is this kind of question is there, so you have to put this and you will get the answer. Then this, then constant ka square. Instead of a, any type of constant, if it is there, you can use this method. Then x square minus a square, x square minus 1, then 1 plus x upon 1 minus x. उल्टा भी हो सकता है, इसकी जगह पे ये भी हो सकता है 1 plus x square upon 1 minus x square, 1 minus x square upon 1 plus x square. In that form, you have to put x square is equal to cos theta. That's it, nothing else. अगर यहाँ पे a square x square आ जाता है, a square x square आ जाता है, so इसी same method में you have to put here x square is equal to a square cos theta, and then solve like that. So these methods, or you can say that these substitution make the question very simple and easy for you. So pause the video and note down and learn properly. Now, based on this trigonometric substitution, we will do rest of the question of 5.3. Y is equal to sine inverse 2x 1 plus x square. So before this exercise, I taught you some basic what to put. So in this kind of method, you can say that we have to put x is equal to tan theta. So थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इम्प्लाइज थीटा कितना आ जाएगा? tan यहाँ चला जाएगा, tan इनवर्स x. नाउ कम y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज sin 2 theta. ये कैंसिल आउट हो गया. What is left? Y is equal to 2 theta. It implies y is equal to 2 theta की कितनी वैल्यू है? Tan inverse x. Now differentiate with respect to x. तो y का आ जाएगा dy upon dx 2 tan inverse x का 1 upon 1 plus x. This is your derivative. So simple. So while using this substitution, you can make the question so simple in derivative also, and especially in integration also. And in competition exam, it's very useful for you. Here, now this, put x is equal to tan theta, क्योंकि इसको देखने से ही लग रहा है उस टेबल से कि ये tan theta का फॉर्मूला बनेगा. It implies theta is equal to tan inverse x. So y is equal to tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus
tan square theta. Y is equal to tan inverse tan 3 theta. ये cancel out हो गए. Y is equal to 3 theta. It implies y is equal to 3 tan inverse x. Now differentiate with respect to x. So it will become y का dy upon dx 3 constant है. tan inverse का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x. So simple. So you can use this substitution to make the question more simpler. Come to problem 11. See, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Again, put x is equal to tan theta, because while we put tan theta, it will become 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and that is the formula of cos 2 theta. It implies theta is equal to tan inverse x. So y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So it will become cos inverse cos 2 theta. So y की कितनी वैल्यू आ गई? 2 theta. It implies y is equal to 2 tan inverse x. Differentiate with respect to x. तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy upon dx is equal to 2 1 plus x. So very simple if we can use this substitutions. Otherwise, to differentiate this, it will consume more time and it will complicate. It is complicated also. Pause the video to note down. Now, come problem 12. See, if I will put here tan theta, it will become cos 2 theta. But sin is there, sin inverse. So then again that cos 2 theta will change in sign. How? Let us see. Put in according to these kind of expressions, we have to put x is equal to tan theta. So it implies theta किसके equal आ जाएगा? Tan inverse x. So y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो sin inverse ये बन गया cos 2 theta. अब इससे इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, बट कैन आई राइट लाइक दिस? sin inverse sin 90 minus theta. sin 90 minus theta क्या होता है? cos theta. So I can write instead of this. So this ये कैंसिल हो गया. So y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x. Now differentiate with respect to x. ये बना dy upon dx. pi by 2 कांस्टेंट है 0 minus 2 tan inverse का 1 plus x square. It implies minus 2 upon 1 plus x square. So derivative of this function is this. Now come to problem 13. क्या कहती है problem 13 हमें? Again this is 2x 1 plus x square. ये एक्सप्रेशन होता है. So क्या पुट किया जाता है? Put x is equal to tan theta. So y is equal to cos inverse 2 tan theta 1 plus tan square theta. तो ये क्या बन जाएगा? It implies y is equal to cos inverse sin 2 theta. अब sin को cos में कन्वर्ट करना है, तो how we'll write cos 90 minus ये कैंसिल आउट हो गया. So y is equal to pi by 2 minus 2 theta. It implies y is equal to pi by 2 minus 2. थीटा की क्या वैल्यू है? tan inverse x. तो tan inverse x.
Now differentiate with respect to x. dy upon dx is equal to 0 minus 2 upon 1 plus x square. It implies minus 2 upon 1 plus x square. So this is the derivative of, see इसका भी डेरिवेटिव यही आया और इसका भी डेरिवेटिव यही आया दोनों केसेस में. क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में लास्ट में क्या बचा था? tan इनवर्स x. So pause the video to note down. Now come to problem 14. Y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. So here, according to the substitution method, you can put x is equal to cos theta or you can put x is equal to sin theta. This is totally depend upon you. So put x is equal to sin theta. So y is equal to sin inverse 2 sin theta under 1 minus sin square theta. So y is equal to sin inverse. It will become 2 sin theta cos square theta और बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? cos theta. तो ये फॉर्मूला होता है किसका? sin 2 theta का. कैंसिल आउट. इट इम्प्लाइज y is equal to 2 theta. अब थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं. थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin inverse x. So y is equal to 2 sin inverse x. So differentiate with respect to x. dy upon dx is equal to 2. sin inverse का होता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इफ आई विल पुट हियर cos थीटा, तो जैसे ही मैं यहाँ cos इनवर्स x लिखूंगा उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है. सो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको ये देखना है कि x किसको बिलोंग करता है. x अगर बिलोंग करता है कि सेकंड को, जैसे साइन क्या होता है? अगर साइन का देखें 0 से 90 तो 45 डिग्री पाई बाय 4. साइन की वैल्यू 0 पे 0 और इस पे, तो ये वैल्यू क्या करती है? पाई बाय 4 और इसमें क्या करती है? इंक्रीज करती है. जबकि अगर मैं उल्टा कॉस का देखूं तो 0 से पाई बाय 2 ये वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है. ये 1 है और ये 0 है. 1 बाय रूट 2 पे आके क्या हो जाती है? तो हमें वही चीज चेक करनी है. और रेस्ट वन इफ यू विल राइट दैट आंसर आल्सो, दैट विल आल्सो कंसीडर एज ए करेक्ट वन. नाउ कम टू दिस. y is equal to secant inverse अंडर 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1. जब ये फॉर्म होती है तो हम क्या पुट करते हैं? पुट x इज इक्वल टू cos थीटा. तो थीटा कितना आ जाएगा? cos इनवर्स x. y इज इक्वल टू secant इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. y इज इक्वल टू secant इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला. और इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू secant इनवर्स secant 2 थीटा. आप जानते हैं 1 अपॉन cos थीटा secant थीटा होता है, कैंसिल आउट हो गया. y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. इसकी डेरिवेटिव होती है. सो while if we will use the substitution process, so you will make the questions or their solution very easy. Otherwise it will take lot of time to differentiate this. First we have to differentiate secant inverse, then we have to differentiate its angle. So always use this substitution method in derivative also, in trigonometric also, in inverse trigonometry also, and in integration also. In competition examination also or in CBSE also, it will save your time. Pause the video
to note down and complete this exercise. 5.3. Jai Hind.